Hello, hello, hello. Hi, guys. Yeah, actually, I just didn't saw. Welcome back to the new live stream. Actually, I'm unable to turn on my video because I don't know. There's some problem with my OBS right now, so I'm just trying to figure out कि क्या problem है. I think शायद मेरे को update करना पड़ेगा OBS and the video will be appearing. Hello, hi. So I'm in this position for the Euro USD. To my stop loss is around 1.17002. The TP would be around 1.16708. So this is the position that I'm looking forward. अभी यहाँ पे एक gap down opening हुई है इस candle की. तो let's see what happens. बाकी if you see on the 4 hour time frame, तो the candle is already being flipped. तो candle already flip हो चुकी है. So that's why I'm looking for the bearish setup. And even if you look on the 1 hour time frame, तो 1 hour time frame पे we have a good breakout of the previous hourly candle. So this is the scenario right now. If you see also, अगर आप fib भी लगाते हो ना on 4 hour time frame, तो 4 hour time frame पे भी if you see from here, so we have the closing below the 61% level. So that also means that we can get the bearish closure. Plus there's only one confluence कि अगर हमारी ये वाली कैंडल फ्लिप होती है दिस डेली कैंडल, तो यहाँ पे we can see some kind of rejection on this fair वाली का particular. So by that time we can have like 1:1 और हम अपना stop loss BE कर सकते हैं if you want and can book the 70% of the target. बाकी we can rest run it to the full TP. Let's see then what can happen. वीडियो सही हो जाएगा ओबीएस में जाके सही करिए मैम. एक्चुअली मैंने ट्राई किया वो बार बार आई थिंक इशू आ रहा है कैमो कैम से. तो आई थिंक मैं स्ट्रीम के बाद वो फिक्स करती हूँ तो कल से आई गेस ठीक हो जाएगा. 5K में कितने लॉस ले. 5K में आप 0.25 का अगर लॉट ले रहे हो तो $50 बहुत है लॉस अराउंड. $50 मतलब हो गया आपका 1% का लॉस हो गया उसमें. हेलो हाय शुभदीप. आपका वीडियो नहीं दिख रहा है और साउंड भी अच्छे से नहीं आ रही. किसी को भी साउंड नहीं आ रही है मेरी या फिर आई थिंक साउंड मेरी ठीक है बस वीडियो की प्रॉब्लम है. अगर एक बार आप मुझे दोबारा से चेक करो. मैम हम तो आपको देखने आए थे. नो प्रॉब्लम टुमारो आई विल कम लाइव विद द वीडियो ऑन. अभी देखती हूँ क्या इशू है मेरी उसमें. लॉट साइज और लॉट साइज आप रखो अपना 0.25 के अराउंड. 0.25 इनफ है आपका लॉट साइज 5K के अकाउंट पे. साउंड इज कमिंग आ रही है. ऑल राइट. तो दिस इज द सिनारियो. किसी को अगर कोई डाउट होगा यूरो यूएसटी में तो मुझसे आप पूछ सकते हो. बाकी फिर आज लाइव बंद कर तो आप तो दिख नहीं रहे हो. नहीं नहीं आप लाइव में रह सकते हो. आप सुनो मैं क्या कह रही हूँ यूरो यूएसडी में. can't see the levels for this trade. So basically levels मेरे यही है. आप देखो first of all आप डेली टाइम फ्रेम पे आओ. तो मैंने जो एनालिसिस किया है डेली एनालिसिस में जो हमारी ये वाली कैंडल थी 6th जैन 5th जैन की कैंडल थी.
तो वो ऑलरेडी लिक्विडिटी इसने बहुत अच्छे से ग्रैब कर दी थी, यहाँ पे फेयर वैल्यू का बनाया, यहीं से इसने एक रिवर्स करा, राइट। तो ये जो वाली कैंडल थी हमारी, जो कल की कैंडल बनी थी, तो कल की कैंडल जो ये हाफ विक इसको फिल करने आई, जो ये फुल विक बनी थी इसको हाफ विक कंप्लीट करने आई, और ये डेली कैंडल भी फ्लिप हो रही है। अगर आप 4 आवर पे भी देखो तो ये हमारी रेंज है, दिस इज द स्विंग, राइट। तो अगर आप यहाँ से फिप भी लगाते हो ना, तो यहाँ से आपका क्लोजर बिलो 61% लेवल है, प्लस आपका 4 आवर फ्लिप हो चुका है ऑलरेडी, 4 आवर भी फ्लिप हो गया है, एंड इफ यू सी ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, सो वी आर गोइंग ऑल बेयरिश टू टारगेट द लिक्विडिटी राइट ओवर हियर। अब हमें जो एक एक्सपेक्टेशन है, जो यहाँ पर अगर आप देखो डेली पर इस एरिया में दिस रेंज, यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल सकती है। सो टिल देन हम यहाँ पे अपना 1:1 का टारगेट बुक कर सकते हैं, एंड प्रॉफिट 70% हम अपना लगाकर बीई कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, इफ यू गाइज वांट एंड इफ यू डोंट वांट होल्ड द होल ट्रेड। बाकी एंड 5 मिनट्स पे तो हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर मेरा बेरिश था, और ऊपर से कैंडल भी गैप डाउन क्लोजिंग हुई है, मतलब कि सेलर्स का ज्यादा प्रेशर था। सो वी हैड अ गुड फेयर वैल्यू का, पे हम गैप पे ही हमने ओपनिंग यहाँ पे अपना एंट्री बनाई। तो जो हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी बनता है फेयर वैल्यू गैप पे, दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट हाईली प्रोबेबल, so that's why we take this kind of trades. See how wonderfully it's we are having the sales down here. My trading style is so simple कि आपको इतना लेवल्स मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। You can just normally check manually कि वेयर इज द प्राइस। हमें 2-3 चीजें देखनी होती हैं कि हमारा पिछली आर्ली, मतलब कि 11:30 की कैंडल कहाँ बनी, और जो हमारी रीसेंट कैंडल जो फॉर्म हो रही है उसने ब्रेक कहाँ किया पिछली कैंडल का। एंड हम लिक्विडिटीज देखते हैं, एशिया हाई और एशिया लो, जैसे अभी इसने एशिया लो की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली है, राइट। वैसे हमारी जो एंट्री थी दैट शुड बी हियर, 2 पिप्स ऊपर यहाँ पे समवेयर। हमारे जो एक और लिक्विडिटी लेवल है दैट इज राइट ओवर हियर, यहाँ पर हमारा इक्वल हाइज है ऑफ एशियन रेंज, एंड यहाँ पर हमारी इक्वल लोज थे ऑफ एशियन रेंज। बट इन ऑर्डर की 4 आवर फ्लिप हो चुकी है, सो आई एम कंसिडरिंग कि वी कैन गेट मोर बेरिश मूव। सी हमारा ऑलमोस्ट 2.5 पिप्स, 2.8 पिप्स समवेयर अराउंड, यहाँ पर हमारी एंट्री होनी थी। सो बट वी टुक अ लिटिल बिट ऑफ लेट एंट्री राइट ओवर हियर। सो वी कैन लुक फॉरवर्ड कि हम अपना 1-2 पिप ऊपर ही टारगेट अपना बुक कर लें, 19 समवेयर राइट ओवर हियर। See, we are already getting one issue on how much was it? Eight. हमारा almost 9 pips का वो stop loss था. So somewhere over here हम यहाँ पे अपना if you want you guys can do the trade to BE यहाँ पर इस point पर 1:1. My TP is 1.16721. यहाँ पर रहेगा मेरा TP. I will hold the full trade. यहाँ पर हमारा 1:1 हो जाएगा, 1:1 इधर on this line 1:1 will be done.
वैसे तो 1 रेशो मोर देन 1:1 ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज हमारी एंट्री यहाँ होनी चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली होगी सो दे कैन ऑलरेडी डू 1:1। सो हमने अपनी एंट्री ऑलमोस्ट 2.8 पिप्स या 2.2 पिप्स से मिस कर दी थी, तो हमने यहाँ पे ली एंट्री फिर। ठीक है, नाउ इट्स ऑलरेडी, या, so we already got the 1:1, so if you guys want we can do the BE. Let's see if we can get full TP. सी अब हम पर्टिकुलरली इसी रीजन पर आ गए हैं, तो माइट बी कि यहाँ से कंसोलिडेट भी कर सकता है, यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, बिकॉज दिस इज द मेजर जोन ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो ये चीजें हमें समझने वाली है कि व्हाट इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम, but daily is already been flipped. So that's a good confluence for us. This was the region जो अभी इसने ब्रेक किया है। So see कितनी बार यहाँ पर हमारा प्राइस आया and couldn't break this area. 1, 2, 3, 4. So how many times it come? अगर ये एरिया इसने ब्रेक कर दिया तो it could be a effect, डैम इफेक्ट, तो एकदम से ही वो ब्रेक करता है। सो इफ यू सी सर्टेन एरियाज जहाँ पर मार्केट प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया, या फिर कुछ भी ऐसा जोन हमें दिखता है कभी, तो मेक श्योर कि वहां पर जब ब्रेकआउट आएगा या फिर उसके क्लोजिंग डाउन होगी तो दैट विल बी वेरी इम्पल्सिव। यहाँ पे 1:1 हमने नॉर्मली नहीं करा है। देखो 1:1 वाई वी सी, बिकॉज यहाँ पे एरियाज हैं, डेली पर भी एरिया है। सी डेली पर भी यहाँ पे हमारा बड़ा सा एक फेयर वैल्यू गैप एरिया था। ओके, एंड ऑल्सो ऑन द, इफ यू सी दैट जो हमारा एशियन रेंज थी, अगर मैं आपको दिखाऊं हमारी जो एशियन रेंज है,
दिस वन, एशियन रेंज की जो लिक्विडिटी भी ऑलरेडी क्रैब हो गई थी, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ द थिंग्स आपको कॉन्फ्लुएंस में इनको लेकर चलना पड़ता है, सो दैट वी आर प्रोटेक्टिंग आवर कैपिटल. So basically, I what I do is कि usually I don't prefer doing one issue one. Why? Because जो हमारी यूरो यूएसटी की particularly nature है, it's like that it always consolidate a lot. बहुत कंसोलिडेट करता है यूरो यूएसटी नेचर वाइज. सो दैट्स वाई वी प्रेफर कि हम इसे 1:1, जो 1:2 का हम टारगेट ले रहे हैं वो फुली लें. आइदर इट्स टीपी और आइदर इट्स एसएल. So we make it more of mechanical and systematic. That's what I like about Euro USD doing it. So you just place your SL and TP, and that's all. Hello, sorry I'm late. I was in a meeting. Hi, hi. No problem. That's okay. I'm in currently in the sales of Euro USD. सो आई वाज सेइंग कि अगर आप यूनिवर्सिटी करते हो ना, तो मतलब कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है. क्या आप कम रिस्क प्रेफर करते हो लेना या अपना टारगेट जल्दी प्रेफर करते हो लेना. सो फॉर देम इट्स गुड कि आप ले लो 1:1 पे, आप टारगेट बुक कर लो अपना 70% एंड यू कैन कीप द रेस्ट 1:2. बट फॉर मी आई फील लाइक जो यूरो यूएसडी स्पेशली है हमारा, जब कंसोलिडेट इतना करता है कि वी नेवर नो व्हेन इट कम्स टू बी एंड देन अगेन कम्स बैक टू द टारगेट. सो दैट्स आई ऑलवेज प्रेफर कि हम आइदर फुल टीपी ले लेंगे, फुल एसएल ले लेंगे. सो फॉर द पीपल जो बिगनर्स हैं, या फिर फॉर द पीपल हु prefer taking targets early, so they can just do that. Take the 1:1, and if you want SL to BE and book your target 70% or 60% on the 1:1. I mean, interested in buys. I don't know why. Yeah, because we have already it's a possible thing, because अगर हमने एक चीज देखो, हमने लिक्विडिटी भी ले ली एशियन. अगर हम बाय के पर्सपेक्टिव से देखें कि हमने एशियन रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, and on the daily time frame we can have the rejection from this area, this fair value gap area we already tapped in, and यहाँ से already making a rejection. Yeah, एग्जैक्टली. और हमारा जो डेली प्रीवियस डेली कैंडल है उसकी भी हमने वी हैव टेकन द लो. सो दिस कुड बी अ बाय सिनेरियो फॉर इफ you are thinking at a buy perspective. That could be a reason, but for me, like, a 4 hour was also flipped. Plus still, if you see on the 4 hour कि हमारा जो range, we have this range right over here, this has been closed below 61% level already, and 4 hour भी हमारी flip हो चुकी थी. So that's why I prefer taking sales right now. See this range. So if we get the closure of 1 hour below this range, so then we are good to go. If we can get the closure of this daily, this hourly candle here somewhere below, because it's taking the liquidity of previous 1 hour. If it closes above this range only, then yeah, might be. But if it closes down right over here, then might be a continuation. We only need 10 pips to get the TP. For the last previous 2 days, I'm looking for the buys in euro, and it just coming, selling, selling, selling. Gold is going good for me as of now.
What is gold doing? We're in the bearish momentum for the gold, but it's retracing right now. All right, I suppose we are dumping in euro. This kind of momentum I expect from euro, to be honest. If we can get this kind of movement in euro at this particular time, like fast TP, so then it's kind of fun because we are doing it live, and then we don't have to wait the whole day to get the TP. Let's see, we are still in the trend on the 5 minutes. The 5 minute closure is good. 'Ma'am, please do share all your positions in Discord also. Yeah, I will try to share all the position in Discord because actually when I come live, so I share all the position on the live itself. But when I'm not live, then I just share the position on Discord. But I will try the same to do that. Alright, few pips away from the TP. 6, 7 pips almost. Let's see. 7 minutes left to be closing of hourly candle.
Do we have any kind of news today? Let's see. Forex factory. We have orange folder for the euro at 330 core CPI flash estimate. We have red folder at 6:45. And job opening also at 8:30. Yeah, we have some red folders today. In 5 minutes, we'll be having the opening of the London session as well. Let's see. Well, our structure is maintained, then till then we're good to go. But let's see. I just want this 1 hour closure below this range, so then we are good to go. But here you're having the rejection because of this for a while ago. The same is on the daily as well. This one.
Euro is at Monday's 1 hour candle flip range and also filled the 1 hour FVG and now taking the rejection, due to which I feel invested in buys rather than sells. Mm, See, rejection is due to we have the range of this Favalika plus on the daily time frame as well. One is that scenario plus um if you see this candle is a no wick candle. If we can see if it's a no wick candle, yeah, it's a no wick candle. So it came down to compensate that, and if it forms some kind of reversal on the 5 minutes time frame, then it might be a reversal. But until the trend is intact, till then we are in the trend itself. But also if you see like the range on the 4 hour time frame, it like had a closure below 61% level, this particular swing that we had. Let's see. The 1 hour closure is looking like good, like it's not that bad because it closed below this range right over here. But if the 1 hour, like the daily candle flipped again, it won't be making any sense. Let's see. But might be it will be consolidating in this range for sure. I entered in buys risking $20, not more than that. I feel like it will flip from here. Yeah, better you take a bit of less risk on this trade for the buys. I think now it's gonna consolidate because of this range right over here. We already got impulsive move because, and we have a demand zone also of Monday's NY session swing in 5 minutes.
Now the structure is still bearish. Let's see, few pips away from the TP. Five pips almost. Just few pips more we need. We are in the middle of this Valley Cup right now. Because the thing is that if we took the liquidity but it closed below the range, so that is something that you need to think, that if it this candle would have been closed below above this range after sweeping the liquidity, then might be a little bit of bias would be my bullish. But because of the early closure, I'm just a bit of again bearish to the bearish side. Let's see, few pips away. 5 pips. Your camera is not showing. Actually, I have a problem in my camera right now, so I was just trying to switch it on, but I was unable to do that. I think my OBS is not updated because of that, maybe, but I'm gonna fix it after that. Let's see a few pips if we can get that. And even if we can get the closure somewhere right over here below, then also might be that we can go more further down. Again, we have a London opening with the bearish Valley gap forming.
Let's see, we're about to hit the TP. Few pips more. So on hourly also we are forming the bearish Fibonacci gap, and we already flipped to the downside. If you see this candle, it still needs to be filled half at least this wick. Let's wait for the 10 more minutes and then I'm gonna end my live stream, and I'm gonna update everything on the Discord channel if it's deeper, whatever. Let's see if we can get. And also, if you guys have any doubt or question, just you can ask in the community chat or maybe on the live wherever I am, related to level, strategy, or anything. We want a big impulsive candle to downside. Let's see.
This part is the most boring one. Wait when it's just near to the TP. Few pips is 3.9 pips we want. Slow movement. Exactly. I mean, it's just teasing. It's few pips away and it's just teasing us, making indecisive candles right over here. But it almost filled the Fair Valley gap of this range. It's a super slow movement because we already had some kind of impulsive move. If we would have entered right over here, then our TP would be done almost. I think that it will take its time now. Till then, we don't have a market structure shift. We don't have to worry about. Fair value gap completely filled, and if it reverses from here, we can literally target the trend line going all the way in top in 1 hour and 4 hour time frame. In 1 hour and 4 hour time frame. 1.16741 is my cell. 16741. Here. Oh, we are saved by few pips. Huge SL. Alright. So it tapped to the London session first. FVG of the London session. Let's see.
I have a feeling that it's gonna consolidate. Alright, guys, then let's end the stream. And if it's gonna be TP or whatever SL, then I'm gonna update you on my Discord channel. And if you guys have any question, you can just freely ask in the community chat, or you can just type in the inbox in the Discord itself. And then let's wait for the straight. As it's deeper SL, we're gonna take it. And that's all for the day. And see you tomorrow at the same time. Let's see. I'm gonna just fix my camera. I don't know what's up with my OBS these days. It's just hanging too much. So I think probably I'm gonna update this soon, and we will be back soon on the live. Alright, guys. Then see ya. Let's wait and let's go together. Thank you so much.